गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज स्टार्ट करबा हमर B.Ed एग्जाम रो पीआईक्यू को नै कि पिला माने तुम मानंग पई टीचिंग एप्टीट्यूड रो किछि पीआईक्यू अछि, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि। तो आमे से सब जिंस गुडा का डिस्कशन करबा वन बाय वन, केवल जे क्वेश्चन डिस्कशन करबा नुहे, क्वेश्चन रिलेटेड आउ जहाँ भी जिनस गुड़ा अच्छी जो जिनस गुड़ा आमको पढ़ा दरकार, आमको डिटेल्स रे बुझा दरकार आम एग्जाम को बेस्ट करबा पाई। तो सही सब जिनस गुड़ाक आम बुझा एवं जानिबा को जिनस गुड़ाक आम बुझा दरकार, क्वेश्चन को भाया बुलाई पचारूँ जदि एनईपी 2020 ताले एनईपी 2020 को भाया क्लास आसूची माने क्वेश्चन आसूची जदि आम जानिले भाइगर्स की थ्योरी पियाजेट थ्योरी ताले आम यस सिटी पिलांगा पाई मध्ये हेल्पफुल मो टिके पिला मानको शेयर कर दिए देन आम क्लास स्टार्ट करबा। सिटी B.Ed बहुत पिलांगा पाई एटा हेल्पफुल निहाती भाबरे देख तुमको काम रे लागिबो एग्जाम रे। गुड आफ्टरनून समस्त को। तो समस्ते जॉइन हो जाओ जल्दी जल्दी हमें स्टार्ट करबा। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड आज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर फ्रीक्वेंटली ऑफ टैक्स ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज द टीचर्स हु ऑफ टैक्स हो जाती बा टैक्स रु बाहर को हो जाती फ्रीक्वेंटली बहुत टाइम क्लास रु ताले टीचर सेठी कोन करबा दरकार। सिटी पिला माने मध्ये देखो कि एग्जाम रे क्वेश्चन आसिले तुमको आगो को तमरे सिटी एग्जाम टी आगो अछि तो केमिति तमे कोन करिवो। तो से कहला अलाउ ऑल स्टूडेंट टू सोशलाइज ड्यूरिंग ग्रुप वर्क टू कीप देम कंफर्टेबल। सब स्टूडेंट मानन को सोशलाइज है कि ग्रुप वर्क रे एंगेज करेबा सो दैट से माने कंफर्टेबल हेबे। हैप्पी गुरु पूर्णिमा तम माने मध्ये अपकमिंग फ्यूचर गुरु। तो समस्त को मध्ये मो तरफ गुरु पूर्णिमा रा अभिनंदन पिला माने। ना रिड्यूस द नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज एंड फोकस मोर ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। आमे ग्रुप एक्टिविटीज को रिड्यूस करबा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दबा। ना असाइन ऑल टास्क एज इंडिविजुअल वर्क टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो समस्त को इंडिविजुअल वर्क दबा डिस्ट्रैक्शन दूर करबा पई। ठीक अच्छी तापरे आसिला यूज ग्रुप रोल्स एंड प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी विद इन ईच ग्रुप। आमे कौन करबा समस्त को ग्रुप वर्क प्रोवाइड करबा, दलगत कार्य दबा एवं तांकु सठिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करबा जहा द्वारा कि सेमाने निजर अकाउंटेबिलिटी बुझी पारिबे, मोर निजर कौन कर्तव्य अछि, मोर निजर कौन दायित्व अछि। तो यार राइट आंसर पिला माने होछि ऑप्शन डी। ओके कौन ना व्हेन स्टूडेंट्स जेते बेले पिला माने इन क्लास आर फ्रीक्वेंटली ऑफ टैक्स ठीक से पढ़ु नांती डिस्टर्ब होउछंती ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटी कोनोसी भी ग्रुप एक्टिविटीज रे द टीचर शुड ताहले सही जगह रे जने टीचर कोन करबा दरकार। ओके से कोन करबा दरकार ना यूज ग्रुप रोल्स, प्रत्येक पिलां को निज निजर रोल्स को से असाइन करबे, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन पूरा पूरी सठिक इंस्ट्रक्शन गुडा को प्रोवाइड करबे सूचना and ensure accountability within each group एवं प्रत्येक इंडिविजुअल मानकर दायित्व को एंश्योर करेबे कौन ना ग्रुप वर्क भितरे। नेक्स्ट द्वितीय नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर द टीचर टू हैंडल ए क्लासरूम व्हाइल स्टूडेंट्स आर फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रप्टिव और प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम लर्निंग। तो जने टीचर का पाई कोटा गोटे ठीक वे टू हैंडल ए क्लासरूम, गोटे क्लासरूम को हैंडल करबा व्हाइल स्टूडेंट्स आर फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रप्टिव से बार बार क्लास को डिस्टर्ब करूछंती एंड प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम लर्निंग एवं अन्य मानन को लर्निंग रु प्रिवेंट करूछंती बा हटेया पई चेष्टा करूछंती। किसी प्रॉब्लम होनी, डोंट वरी। Yes, आमे कौन करबा establish clear cut rules and expectations while providing consistent positive reinforcement for exhibiting good behavior। आमे रूल्स रेगुलेशन गुडा को तांको बनतेबा एवं कोन ना तांको कोन करबा क्लियर इंस्ट्रक्शन दबा तांको भितर गुड बिहेवियर आनिया पे जहा द्वारा कि से माने अन्य मानन को डिस्टर्ब करिवे नाही।
Next asla, name the classroom management technique that helps students to become self-disciplined and responsible for their own learning. गोटे क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक कुह जहा द्वारा कि कौन हम हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम सेल्फ डिसिप्लिन से सेल्फ डिसिप्लिन हो पारे एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग फ्रिक्वेंट पनिशमेंट अथॉरिटेरियन कंट्रोल एक्सटर्नल रिजल्ट्स ओनली ना कोलाबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग तांको बार बार आमे पनिशमेंट दबा ना आमे गोटे कंट्रोल करबा मु ही हुच हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मु जहा कहबी सैया हबो ना एक्सटर्नल रिवार्ड्स बाह्य कौन सी गोटे प्रेस दबा रिवार्ड दबा ना कोलाबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्ते मिली मिसिकी प्रॉब्लम टा बा असुविधाटा को समाधान करबा वेरी गुड राइट आंसर होची ऑप्शन डी से कहिला जो क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम सेल्फ डिसिप्लिन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग जेते बेले आमे गोटे ग्रुप वर्क करिबा ग्रुप रे प्रत्येकटी मेंबर कर रोल को आमे तांको बक्तेइबा दलगत कार्य करबा एवं प्रत्येक दल रे जने लीडर रहिबे मुखिया एवं प्रत्येक दलर प्रत्येक व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल रहिबे आमे कोन करबा सेही जिंसडा सेमानंकु बक्तेइबा प्रॉब्लम सॉल्विंग एया हबा दरकार कोलाबोरेटली कामटा करबा ताहाले मिली मिसिकी कले ही सेमाने निज लर्निंग पई रहि परिबे आई एम बैक रावण तापरे अकॉर्डिंग टू लेव भाइगर्सकी लर्निंग इज देख लर्निंग कौन लेव भाइगर्सकी अनुसार ये सिंपल क्वेश्चन आसुची तमे भाबुथबो मैम कोउठु गोटे पहाड़ भलिया क्वेश्चन आसुची किछि पहाड़ पर्वत भलिया क्वेश्चन आसीबा दरकार नहीं अकॉर्डिंग टू लेव भाइगर्सकी लर्निंग इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी ए पॉजिटिव एक्टिविटी ए कंडीशन एक्टिविटी ए सोशल एक्टिविटी तो लर्निंग ता कौन गोटे व्यक्तिगत कार्य गोटे पॉजिटिव एक्टिविटी ना गोटे कंडीशन जन को शर्तपूर्ण कार्य करा होची ना गोटे सामाजिक कार्य गुड आफ्टरनून रजत वेरी गुड तो समस्त राइट आंसर अच्छी समस्ते करेक्ट ए सोशल एक्टिविटी तो अकॉर्डिंग टू लेव भाइगर्सकी लर्नर इज सोशल लर्निंग इज सोशल एक्टिविटी द्वारा लर्निंग हेई थाए तो भाइगर्सकी कौन कहछनी ना सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी सामाजिक गठनवाद विषय कहते लेव भाइगर्सकी से कहा को गुरुत्व देछनी ना से कहते थ्रो सोशल इंटरैक्शन आमे सामाजिक स्तर रे परस्पर द्वारा इंटरैक्ट हबा द्वारा ही हमर नॉलेज बा ज्ञान रो डेवलपमेंट हेई थाए ओके मनीषा अगस्त मासरु इंटीग्रेटेड बीएड स्टार्ट हेई जिवो डोंट वरी अबाउट दैट बहुत जल्दी तुमरो आई टाइप रो क्लास स्टार्ट हेई जिवो प्रणाम पुष्पांजलि तो से कहते आमे सोशल इंटरैक्शन द्वारा हमर बेटर नॉलेज डेवलपमेंट करि परिबा होयरस पियाजेट कौन कहते पियाजेट कहते आमे हमर बायोलॉजिकल प्रोसेस पियाजेट और भाइगर्स के भीतर बेसिक डिफरेंस कौन ना पियाजेट बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस हेरिडिटी ए जिनस को गुरुत्व दउथवा बेले सोसाइटी को गुरुत्व दैछंती के भाइगर्स की कहते मु सोसाइटी द्वारा इंटरैक्शन करके डेवलपमेंट करबी होयरस पियाजेट कहते हेरिडिटी आमर जोटा जिनसटा से जिनसटा को लेके हमर डेवलपमेंट हबो देन आहुरी मध्य कहछंती कोन ना ये लैंग्वेज भाषा एवं कल्चर लैंग्वेज एंड कल्चर भाषा और संस्कृति को मध्य गुरुत्व दैछंती एही भाषा रे तीनटा जो स्पीच कथा कुआइछि कोन ना गोटे हैला सोशल स्पीच आ गोटे हैला प्राइवेट स्पीच आ गोटे हैला इनर स्पीच आ गोटे कौन ना इनर स्पीच तीन प्रकार स्पीच कथा कुहा जाई अछि कौन ना हमर हैला सोशल स्पीच प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच फर्स्ट सोशल स्पीच देन प्राइवेट स्पीच आस्ताए निजे बुझिया पई चेष्टा करि थाए देन इनर स्पीच माने से प्राइवेट स्पीच ता छुआर जेते बेले इंटरनलाइज हेई जाई थाए तो एही भली भाबरे विभिन्न प्रकार स्पीच द्वारा मध्य छुआ एनवायरनमेंट सहित निजर इंटरैक्शन सोशल इंटरैक्शन एवं निजर डेवलपमेंट कथा करि थाए ओके तापरे आसिला कोन ना हमर भाइगर्स की कोन कहछनी जे पीडी
बेले बेले ये जिनस गुड़ा आसुचे जेपीडी कांसेप्ट किए कही भाइगर्सकी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट तो ये जेपीडी कथा कांसेप्ट किए कही ना लेव भाइगर्सकी कही ताले जेपीडी कौन ना व्हाट ए चाइल्ड कैन डू एलोन गोटे छुआ मु जदि एना कंसीडर करबी मते आज ए चाइल्ड मु निजे कौन करी पारुछि then what a child cannot do से कौन करी पारु नाही and what a child can do with the help of other आउ जने चाइल्ड अन्य जनकर साहाय्य रे कौन एक्चुअली करी पारुछि what I cannot do what I can do and what I can do with the help of other जो गैप ता रहिला मु कौन करी पारिली एवं मु कौन करी पारिबी नाही मु अन्य जनक हेल्प रे कौन करी पारुछि गैप बिटवीन व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कैन नॉट डू से जिनसटा को आमे कहूचे जेपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जदि मु जनक हेल्प रे कली से जनक किए ना से जनक होछ एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स मींस मो ठारू जी अधिक नॉलेजेबल मु तांकू कहूची कौन ना सी मते जेपीडी प्रदान करूछंती बा सेटा को मते हेल्प प्रदान करूछंती से एमकेओ किए हे परिबे जदि तुमको परीक्षा रे पड़िला टीचर हे परिबे पेरेंट्स हे परिबे सिबलिंग्स हे परिबे पीयर ग्रुप बा तमरो फ्रेंड सर्कल मध्ये हे परिबे के कोनोसी तमठु जने जूनियर मध्ये तुमको हेल्प करि परिबो जदि से कोनोसी विषय रे तमठारू अधिक किछि जानिछि तो तमठारू जी अधिक किछि जानिछि तो सीए तुमको सब समय रे हेल्प करि परिबो तुमको आगो को जिबारे बुझिहेला तापरे आसिला जो हेल्प करबा ई हेल्प करिवार प्रोसेस ता कोन ना ही हेल्प करिवार प्रोसेस ता हला स्कैफोल्डिंग रा माने कोन ना टेम्पोररी सपोर्ट स्कैफोल्डिंग रा माने होची टेम्पोररी सपोर्ट बा स्थायी सपोर्ट करिबा उर्वशी जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी तुम्हें मते कांटेक्ट करो कॉल करो आमे कथा हवा किंबा व्हाट्सएप रे मते टेक्स्ट करो सो दैट मु किछि गोटे सॉल्यूशन प्रोवाइड करि परिबी एमिति रे मु किछि टेक्स्ट पढी कि बुझी पारुनी तो मते डायरेक्ट कॉल करो उर्वशी आमे कथा हवा जिनसडा कोन हेछि तापर मु सॉल्यूशन प्रोवाइड करिवि तो ये जिनसटा हला स्कैफोल्डिंग माने टेम्पोररी सपोर्ट फॉर दैट गुड स्टूडेंट रो किछु ओडे होउनी मु ताको सेई जाई बुझेबी जे पर्यंत से बुझी नाही से वंस बुझी गला धीरे धीरे सेई बुझेवा जिनसटा को मु कमई देबी नेक्स्ट आसिला लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग दिस स्टेटमेंट वाज गिवन टू तो एई थ्रू गोटे जिनस मने रखिथिबो पिला माने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आसुची को डेफिनेशन टा किए देइथिले तो निजर डेफिनेशन टा भलो भाबरे मने रखिबो गेट्स ओके नेक्स्ट आसिला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट सोशल गोल ऑफ एजुकेशन तो आमर अछि गोल्स ऑफ एजुकेशन कहि सर तापरे कहिबी लिमिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एनकरेजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट ना डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म विदाउट रिगार्ड फॉर अदर्स यस गेट्स इन करेक्ट अछि 6 नंबर आंसर देबा को समस्त ट्राई करा
तो से जिनसटा कहगला डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट अछि गुड आफ्टरनून मिलन यस पीडीएफ प्रोवाइड कर देबी पिला माने गोटे टीचिंग एप्टीट्यूड रा पीडीएफ प्रोवाइड कर देछि मैराथन न टीचिंग एप्टीट्यूड मैराथन टा तुमे माने टेलीग्राम चैनल रु देखि दबो जोटा प्रीवियस मु गोटे 1 मंथ आगु नै थिली टीचिंग एप्टीट्यूड रा थ्योरी पीडीएफ ता सहित प्रोवाइड कर देछि सिटी सहित डिस्टेंस पीजी आराम से करि परिबो पूजारानी जदि तमरा सिटी हेई जाउछि त आराम से तुमे डिस्टेंस पीजी चाहिए करि परिबो तो हमर गोटे अछि पर्सनल एम जोटा को हमें कहू छी इंडिविजुअल पर्सनल और इंडिविजुअल देन आउ गोटे को आमे कहूचे जोटा हमर रहिला सोशल एम ऑफ एजुकेशन तो पर्सनल एम ऑफ एजुकेशन कौन कही थाए ना पर्सनल बा इंडिविजुअल एम ऑफ कही थाए कि इंडिविजुअल फुल पोटेंशियलिटीज एबिलिटीज नेचर ऑनेस्टी ए जिंस गुडा का आमे केमिति फुलेस्ट पोटेंशियलिटीज केमिति डेवलप करियो एंड सोशल गोल्स कही थाए आमे सोसाइटी रे ताकू जने अकाउंटेबल सिटीजन्स एवं सोसाइटी रो वेलफेयर केमिति करि परिबा बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम रो डेवलपमेंट केमिति करि परिबा से ता ऊपर ही गुरुत्व देई थाए तो पर्सनल एम रे कौन जीवन ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जीव पर्सनल एम रे ऑलराउंड डेवलपमेंट जीव कौन जीव ना ऑलराउंड डेवलपमेंट आमे कहि परिबा ऑलराउंड डेवलपमेंट हैला आम भितर विभिन्न प्रकार क्वालिटीज गुडा को डेवलपमेंट करबा ए सब जिंस गुडा को भितर जीव ना पर्सनल सोशल एम रे कौन जीव ना सोशल एम रे हमर डेमोक्रेटिक वैल्यू कोऑपरेशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ए सब जिंस गुडा को सोशल एम रे जीव तो एजुकेशन मुख्यतः दुई प्रकार एम अच्छी पर्सनल एम एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन तो पर्सनल एम रे गोटे सिंगल इंडिविजुअल फुलेस्ट पोटेंशियलिटीज को से केमिति डेवलप कराई परिबो से सही विषय कहिछि एंड सोशल एम रे से कहिछि कि आमे कोन करि परिबा ना आमे सोसाइटी रो केमिति वेलफेयर करि परिबा समस्त को नै की ओके तो से जिनसटा को आमे डेवलपमेंट करबा पई चेष्टा करूछे ता पर आ गोटे क्वेश्चंस रहिला कि ताहले हमकु पर्सनल एम दरकार ना सोशल एम ऑफ एजुकेशन दरकार आमे कोउटा डेवलप करबा दरकार कोउटा बेस्ट ना बोथ पर्सनल एम both social aim are important through education we can develop first the personal fullest potentiality of individual personal aim then this potential development of an individual बा गोटे individual जो fullest development करूचे सेटा social development पाई fruitful हबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द रोल ऑफ एनटीए इज टू एनटीए रो फुल फॉर्म कोन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फुल फॉर्म मध्ये मने रखथबो रोल ऑफ एनटीए इज टू ओवरसी करिकुलम डेवलपमेंट मैनेज टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेवलप हायर एजुकेशन पॉलिसीज वेरी गुड सब तरह क्वेश्चन लिख कर दबो नेशनल लेवल एंट्रेंस न कि नेशनल लेवल एंट्रेंस करो क्वेश्चन लिख करो पुणी थरे री एग्जाम करो पुणी लिख करो पुणी गधा को पास कर दियो पंडित को फेल कराई दियो एई सिस्टम चलथिबो ठीक अछि ना कंडक्ट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम यार रहुछि नेक्स्ट 8 नंबर हैला वन ऑफ द की चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज आमे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जेते बेले प्रोवाइड करूछे तार बिगेस्ट चैलेंज कोन ना emphasizing students mastery of skill developing personalized learning assessment lack of flexibility in learning space na encouraging real world application of knowledge one of the key challenges कोटा challenges of in implementing competency based education बेटा तम मानक पई टैक्स भल भाबरे देखि कि दबो कोटा हबो म खाली देखुची के कोटा आंसर दोछ तम माने लास्ट को आंसर दबो तम मानक पई किछि टैक्स न रहले त माने देखु न आ काई देखिबु 8 नंबर सी लैक ऑफ फैसिलिटी इन लर्निंग स्पेस ठीक अछि भाभी कहबो कोटा करेक्ट समस्त भाभी कहबो किछि जनकर ठीक अछि आ किछि जनकर भूल अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द मिड डे मील स्कीम किए रेस्पॉन्सिबल रहउची गोटे मिड डे मील स्किल को इंप्लीमेंट करिबा पाई किए रेस्पॉन्सिबल रहउची पिले
वेरी गुड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कौन थिला ना एमएचआरडी तार अन्य नाम मध्य मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओके तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1985 मिड डे मिल आमर केबे हेतिला ना 1995 मसिया एबे पुनी मिड डे मिल रो अन्य नाम कोन हे जे पिले जदि तुमको रिसेंट पचारिला ना मिड डे मिल रो अन्य नाम होछि पीएम पोषण एबे हे जाइछि पीएम पोषण योजना जहा द्वारा कोन क्लास 1 नु क्लास 10th पर्यंत पिला मानन को आमर मिड डे मिल मिली पारुछि फास्ट एमओई थिला तापर एमएचआरडी हेछि पुणी वर्तमान एमओई हेछि केबेरु ना 2020 एनईपी 2020 अनुसार पुणी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेइ जाइछि ओके नेक्स्ट आसला कोन वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज आमे जो टेक्नोलॉजी प्रयुक्ति विद्या को एजुकेशन यूटिलाइज करूछे तार गोटे नेगेटिव पॉइंट कोन ना एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को एनहांस करबा रिड्यूस एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड इंप्रूव क्लासरूम ना इंक्रीज टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन कोडा करि थाए तो ऑप्शन बी ना रिड्यूस एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड तो आमे समस्ते कहूचे याकू आमे कोन कहि परिबा पिला माने यार ना कोन दे परिबा ना डिजिटल डिवाइड माने से जो गैप टा रहुची समस्ते डिजिटल एजुकेशन को यूटिलाइज करि पारु नाहंती समस्ते से जिनसटा ग्रहण करि पारनती काहर नेटवर्क इश्यूज काहर लो फाइनेंस इनकम आमे सिना कहि दोची टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन बट से जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन टा सबु बेले सबु जगह रे समस्तंग पई हेल्पफुल हो नाही ओके नेक्स्ट जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग तो शिक्षार मुख्य लक्ष्य बा उद्देश्यटा कौन ना टू मेक लर्नर्स मेमोराइज फैक्ट लर्नर्स मान को फैक्ट को मेमोराइज करबा कोन फैक्ट को देखि कि रखिबा टू ट्रांसफर नॉलेज ता हमें आउ जन को ट्रांसफर करबा टू गिव असाइनमेंट्स टू स्टूडेंट्स रेगुलरली स्टूडेंट्स मानन को हमें कोन करबा ना रेगुलरली असाइनमेंट प्रोवाइड करबा ना टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल छुआ मानक भितरे चिंता एवं प्रत्याशमूलक शक्ति एवं समस्या समाधान शक्ति को वृद्धि कराइबा कोटा अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव मुख्य उद्देश्य कोटा वेरी गुड ऑप्शन डी ना टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग चिंता और प्रत्याशमूलक शक्ति व्यवहार करबा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समस्या समाधान करिवार क्षमता आमे पिला मानक भितरे वृद्धि करबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर तो हमर रोल ऑफ द टीचर अछि तमरो सिलेबस रे रोल ऑफ द टीचर रो ए क्वेश्चन डा आसी ओके सब बड़े मन रखुथुव को पोर्शन मोर ए क्वेश्चन टा आसी जदी तमे जानि देलो ताले तुमको हेल्पफुल हबो कि आमे सी पोर्शन को केते इंपोर्टेंस दबा दरकार सब पोर्शन आसुची ना स्पेसिफिक पोर्शन आसुची गुड पर्सनालिटी तांकर भलो व्यक्तित्व हेथिबा दरकार मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन गोटे कठिन श्रृंखला पूरा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यूज करूथिबे गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट तांकर विषय वस्तुर भलो नॉलेज थिबा एबिलिटी टू प्रॉपर्ली मोटिवेट टू द स्टूडेंट्स ना स्टूडेंट मान को प्रॉपर्ली मोटिवेट करि पारुथिबे यस तो राइट आंसर होची एबिलिटी टू प्रॉपर्ली मोटिवेट द स्टूडेंट्स टीचर का रोल कौन ना गोटे कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करबे लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करबे बा फियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करबे ओके तापर आसला जदी तुमको नै छी गुड नॉलेज थिबा दरकार जने टीचर को हमें टीचर केमते कहबा तांका पाखरे गुड सब्जेक्ट नॉलेज अछि ना तांका पाखरे एम्पैथी अछि ओके कंटेंट नॉलेज भी रहिबा दरकार जो मिलन कहिले कंटेंट नॉलेज एठी अछि जोटा देखो कि कंटेंट नॉलेज तो रहिबो
कंटेंट नॉलेज रहिबो तमे टीचर हेइछ माने सेठी पचाला which of the following characteristics is the most important characteristics of a good teacher जने भलो शिक्षक भाबरे कोटा सबुठारो गोटे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट कहला गुड सब्जेक्ट नॉलेज मध्ये इंपोर्टेंट मु जदी किछि जानि नथिबी मु एक रखि कि शिक्षक हेली ताहाले मु छुआ को आलू सारू बैगण कदली एई सब बिकिया कथा सिखेबी पाठ तो पढाई परिबिनी यस बुझाउचे सुन सी आउ डी भीतर डिफरेंस कोन जेते बेले अपकमिंग एग्जाम रे कोनोसी भी एग्जाम लाइफ रे दोउचे एटा पचरुची जेते बेले आज ए टीचर मु रिक्रूट होउची त माने मो पाखरे गुड सब्जेक्ट नॉलेज अछि तमे थरे भाबो एठी सुनीता मैम तमरा सीडीपी फैकल्टी हिसाब रे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हिसाब रे अछंदी सार मध्ये अछंती आहुरी मध्ये समस्त हमें अच्छे जियोग्राफी सार अछंती हिस्ट्री सार अछंती आमर इकोनॉमिक्स सार अछंती समस्त सब सब्जेक्ट मैथ सार अछंती रीजनिंग मैम अछंती आमे समस्ते अच्छे समस्ते कौन पई अच्छे ना आमे समस्ते जणे जणे निज सब्जेक्ट एरिया रे एक्सपर्ट ओके मु मो सब्जेक्ट एरिया रे एक्सपर्ट मोर सेति के टीचिंग एप्टीट्यूड भलो हुए बोली मोर सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी बोली गोटे प्लेटफॉर्म मते आनी कि सेति के परीक्षा करी कि छाणी छुणी की रखी जी काहे ना ता प्लेटफॉर्म रा बेटरमेंट ताको दरकार केमिति मु तमनको बेटर नॉलेज प्रोवाइड कर परबी तो सेमिति हिसाब रे गवर्नमेंट रे जत्ते बेले भी प्राइमरी हो हाई स्कूल टीचर हो बहुत सारा रिक्रूटमेंट एग्जाम हेई करी ही छाणी छुणी के पिलांकु कौन करा जाए ना अपॉइंटमेंट करा जाए जदी जते बेले गोटे छुआ एते सारा एग्जाम क्लियर करी कि से जगह को जाउची तमाने नुह जे से मूर्ख ता पाखरे ऑलरेडी कंटेंट नॉलेज अछि किंतु सब टीचर तम पई इक्वल हेई परिबे नाही एठी देखुथबो आमे 10 12 जण टीचर तम मानको पढाउथबो डेली तम सब्जेक्ट रा 3-4 क्लास आसुथबो किंतु सुनीता मैम जेमिति गायत्री मैम सेमति नुह कि गायत्री मैम जेमिति सुनीता मैम सेमिति नुह किछि जन को सुनीता मैम भल लागुथिबे किछि जन को गायत्री मैम भल लागुथि कोन पई सब्जेक्ट नॉलेज लागि नुह मु केमिति एक्सप्रेस करूची समस्त पाखरे सब्जेक्ट नॉलेज प्ले अछि मो पाखरे अछि समस्त पाखरे अछि किंतु देखिथिबो कि आमे केमिति एक्सप्रेस करूचे रीजनिंग तमे गायत्री मैम को ठारो पढुचो आउ जने टीचर को ठारो पढुचो किंतु गायत्री मैम पढैला बेले तमे भारी खुशी रे पढुचो तमाने कहूच आम फेवरेट मैडम आम भल मैडम आम पीसफुल मैडम केते कोन कहूच काहे के कहूच काहे कि ना सीए सेति कि तुम मानको मोटिवेट करके रखी छंदी सीए सेति कि लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट करि पारु छंदी जोटा कि आउ जन टीचर अछनी तांको पाखरे भी सब्जेक्ट नॉलेज अछि किंतु सीए सेमिति एनवायरनमेंट क्रिएट करि पारु नाहंती तो आमर हैला कि कोन आम समस्त पाखरे गुड सब्जेक्ट नॉलेज अछि सेटा भी मध्ये गोटे गुड टीचर कैरेक्टरिस्टिक किंतु सेठी पछे मोस्ट इंपोर्टेंट जदी 80टा को भितरे मोस्ट इंपोर्टेंट कोटा नंबर ताले हबा एबिलिटी टू प्रॉपर्ली मोटिवेट द स्टूडेंट आमे जतले स्टूडेंट को मोटिवेट करि परिबा जतबेले फ्रेंडली एनवायरनमेंट दबा तो सेटा छुआंगर डेवलपमेंट हे पारिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा which of the following is the primary focus of learner centered approach in teaching कोटा हबो वेरी गुड the need interest and abilities of students amara केतटा अप्रोच अछि amara टीचर सेंटर लर्नर सेंटर आउ लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच अछि हमें जानि छै टीचर सेंटर्ड कोन ना ट्रेडिशनल बा पारंपरिक पद्धति रे हमें शिक्षा दान करि थाउ जोथरे कि टीचर एक्टिव रोल थांदी स्टूडेंट माने पैसिव रोल करि थांती स्टूडेंट माने कोनोसी मुख्य भूमिका ग्रहण करन टीचर निजे लेसन प्लान बनाती निज हिसाब रे पाठ पढ़ती निज हिसाब रे कंटेंट डिलीवर करती होएगा इन लर्नर सेंटर मेथड शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था रे टीचर पैसिव रहंती स्टूडेंट माने एक्टिव रहंती स्टूडेंट मानकर नीड्स आवश्यकता इंटरेस्ट आग्रह एवं दक्षता को देखिकी ही रेडीनेस को देखिकी जने टीचर क्लासरूम रे पाठ पढ़ांती तांको गोटे लर्निंग एनवायरनमेंट देंती से माने निजे लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी रे निजे कार्यटा को करी सीखी थांती नेक्स्ट आसला कोन ना व्हेन स्टूडेंट्स इन ए क्लास डिस्प्ले varying levels of ability which of the following approach is most appropriate to solve the disparity focus slowly on the top performing student to maximize their learning जो माने टॉप करूछन हमें तांको फोकस करिवा provide differentiated instruction that caters to students individual learning needs विभिन्न प्रकार इंस्ट्रक्शन दबा जहार जो नीड्स अछि ताको सेटा कैटर करिवो ना
यूज ओनली वन टीचिंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी केवल गोटे टीचिंग मेथड यूज करबा कंसिस्टेंसी पाई कंफ्यूजन दूर करबा पाई ना असाइनिंग मोर असाइनमेंट टू लर्नर्स ना बहुत सारा असाइनमेंट हमको असाइन करबा वेरी गुड ना आमे जते बेले कोनसी प्रॉब्लम होछि बहुत सारा नीड्स छुआंकर अछि गुड आफ्टरनून समनिता आमे सेते बेले तांको कौन करबा ना डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करबा जोडा कि तांको आगु को जिबारे हेल्पफुल हबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बचला पिले ना आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द एसेंशियल एलिमेंट फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट गोटे इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बा गोटे गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट करबा पई कोटा हेल्पफुल learner engagement and participation option C very good next देखो which among the following is the primary goal of classroom management to limit learner creativity to ensure students follow every rule not to maintain proper order and maximize learning opportunity to assign extra work for learners जोटा तो बड़ा हेतिबो तमा भाषा रे गवर्नमेंट ऑप्शन होची ऑल ऑफ द अबव एंड लंबा ऑप्शन सेटा को हमें मारी जे जीवो option C is the correct answer next is number 17 Conin's witness concept which is critical for classroom management refers a teacher ability to teach without any discipline method ensure always for what is happening in the classroom without having to look directly at student freedom to all students to manage their own behavior now focus more attention to students who are misbehaving 7 number कौन होगा very good 7 number right answer होची option B ensure always for what is happening in the classroom without having to look directly at students okay next आसिला कोन 18 number students learning occurs when principal is vigilant there is active teaching students are made active parents are active एटा देखिया कोन हबो कहला 18 नंबर कौन हम वेरी गुड स्टूडेंट्स माने जो एक्टिव थे से ही है पारिबो नेक्स्ट आसला 19 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द चेंज इन द इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस तो हमर अनुभूति रे जो थरे हमर व्यवहार रो परिवर्तन हेई थाए आमे ताको कोन कहि थाउ परसेप्शन लर्निंग मोटिवेशन ना इंटरेस्ट राइट आंसर होची लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन हैला द एआईसीटी रेगुलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एआईसीटी कहा को रेगुलेट्स करि थाए म्यूजिकल एजुकेशन स्कूल एजुकेशन टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन ना एग्रीकल्चरल एजुकेशन एआईसीटी हैला कोन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन तो टेक्निकल एजुकेशन माने ही हमर हबो ऑप्शन सी टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन तो पिला माने आज एतिकी थिला तो जो माने मटेरियल एंड क्लास रो अपडेट पाइबा को चाहूछ मो सहित जोड़ी रहबा को चाहूछ ताहाले टेलीग्राम चैनल सीडीपी बाय सुनीता मैम को स्कैन करी जॉइन हे परिबो एंड जो मानकर किछ डाउट अछि त माने पचारि परिबो चैनल को भल लागि थिले निहाती वीडियोटी को लाइक कर देबा एंड नुआ थिले अपकमिंग बीएड रो क्लासेस देखिबा पई किबा हमर जहां भी शेड्यूल क्लास होछि देखिबा पई चैनल को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करि देबो थैंक यू एवरीवन टाटा बाय बाय।